Can you confirm my screen are visible to you? Recording चालू किया है क्या हमने? हाँ चालू कर दिया. Yes, sir. Okay. So what we have complete in last lectures? Last lectures we have complete post incoming payment. That means we have complete our AR process and AP process. Okay. Then after that we'll cover just a minute. House bank. Okay. House bank. Yeah. House bank. Write down. The next chapter is a house bank. House bank and automatic payment process. Okay. So, but first we have to configure the house bank. The house bank means what? House bank means what? House bank means our all bank detailed informations to fill in our SAP. Okay. That suppose the company are maintaining their bank account. Canara Bank में है क्या हमारा? Canara Bank में ना? Okay, so Canara Bank are given to you one account number, okay, and based on the account number they have provided to you checkbook, okay, and every day you are issuing the check or you can transfer the money from amount either NEFT or RTGS, okay. So how I will configure my house bank in my company code, okay. So for that we have to write down as a house bank. क्यों? स्मॉल में चाहिए, आई कैपिटल में चाहिए. आई एन डी आई ए 1 2 3. ओके. ठीक है. ओके. Now to maintain my house bank, house bank means all my bank information that we have to enter in SAP. For that, first of all, we have to define the house bank. Write down the first steps. Define house bank. Define house bank. And for that, my T codes are FI12. FI12. T codes are FI12. Okay. And the path are SPRO. Write down the path SPRO. Okay, the path are SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, then under the financial accounting, bank accounting, say bank accounting, then under the bank account, again we have the one more option here, the bank accounts. Bank accounts. Under the bank account, here you have the option as a define house bank. Define house bank. Hello.
ठीक आहे त्याचं जोडी आहे दुसरी पॉईंट करून टाकतात आपले संबंधित तरी मगलीचं बोलू लागला ते पॉईंट तर काय प्रॉब्लेम नाही त्याच्याबद्दल थोडासा साधारणपणे 15 ते 20 मिनिट हा टाकवले सगळे याच्यामध्ये हा तू नको पाहू ठीक आहे बॉईल करताना साधारणपणे 15 ते 20 मिनिट बॉईल होते गरम पाण्यामध्ये आणि स्टोव मध्ये ठेवशील गॅस 5 मिनिट ठीक आहे Okay, so double click on define house bank, then the documentations are here. You can see the documentation. Correct, so these are the documentation here. Each house bank of a company codes represent by bank ID. Okay, तो अब जब हम कस्टमर कोई भी अकाउंट में बैंक में अगर अकाउंट करते हैं हमारे को कस्टमर आईडी आ जाता है. Okay, customer ID, bank ID in SAP system. Every accounts at a house bank by an account ID. ठीक है तो when you are logging your net banking first they will ask you the customer ID and then ask you the password and then you can do the transactions. So like this in SAP also you have to maintain your bank ID. Correct, and these are the activity here. Then execute, double click, execute. Okay, now my system asks me the company code. So what's the company code? So enter the company code DN10, say DN10. And then continue. Click on the continue. Okay. After that, you have this option, change view house bank overview. Then click on the new entry. Okay. Once you click on the new entry, the company code will automatically come here DN10 because at the time of executing, my system asked me the company code. Okay. Now house bank. हमारे कौन सा बैंक क्रिएट किया? कैनरा बैंक है ना. So my house bank will be suppose कैनरा है तो CAN1. ठीक है CANR1 कैनरा 1. ठीक है बैंक की these banks are located in India or outside India you can maintain India here. Okay, and then the bank key means branch code number. Okay, you can say the C Canara dash say 380. Okay, this is the bank key. Then you can enter here as a bank telephone number. Say for example this is a bank telephone number. Then you are contacting to whom person. आप किससे बात करते हैं वहाँ पे. अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए सो हु इज अ कॉन्टैक्ट पर्सन. नंबर तो पता है आपको बट आप किससे बात करोगे. सीसी डिपार्टमेंट और कैश क्रेडिट. यू कैन से एज अ गणेश शर्मा, गणेश कुलकर्णी. ठीक है, नोट डाउन दिस वन. My house bank will be CANR1 and bank ER Canara 380. Right, and then you have the option here the create. So click on the create. Click on the create bank.
Once you click on the create bank, system asks the complete information of your bank. That means address, then street. Okay, so my bank will be Canara Bank Limited and कौन सा ब्रांच है हमारा? पिंपरी ब्रांच, पिंपरी ब्रांच, पिंपरी ब्रांच. ठीक है. Region, the regions are listed here. You can select the region from here as a 1313. Right. Street, we can say Mumbai Pune Highway Road. Mumbai Pune Highway. City will be Pimpri. Okay. Bank branch, Pimpri branch. Swift code, Swift or IFSC code number. Okay. CANERA Canara 000380. Okay. Right. And then bank number. Bank number CANERA and then 380. Right. Maintain this data because this is your complete bank informations. Once you are done, just finish them. Just when you finish, just confirm me, so that we'll go for the next step. If you have the multiple bank, then you can maintain all bank detail information in this way. So we can add another bank. Sure, yeah. बट पहले हम लोग एक बैंक का तो कर लेंगे. आप इस तरह से कितना भी बैंक ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन हैव द मल्टीपल हाउस बैंक. एक आपका अकाउंट है कैनरा बैंक में है तो कैनरा बैंक का अलग हाउस बैंक होगा. एक बैंक आपका HDFC में है तो उसके लिए अलग हाउस बैंक होगा, उसका अलग GL होगा. करेक्ट. एक अकाउंट आपका SBI में है तो उसका अलग हाउस बैंक होगा, उसका अलग अकाउंट होगा, उसका अलग इंफॉर्मेशन होगा, उसका अलग चेकबुक होगा, उसका अलग चेक लॉट होगा. So you can maintain your all detail with your bank wise. Bank wise you can maintain. एक कैनरा बैंक में आपका फॉरेन का भी फॉरेन करेंसी का अकाउंट है तो आप अलग से फॉरेन करेंसी का अकाउंट भी खोल सकते हैं इसमें. ठीक है. बिकॉज योर लोकल ट्रांजेक्शन विल बी करेंसी एज INR and if you are importing and exporting, that time your currency will be changed from INR to either USD or Euro. Can we go next step? Kanchan madam? Yes. Say continue. Say click on continue. Okay. And then if you want to see the detailed information, then you can click on the address. You will get complete address here. Okay. You will get address here. And then you can suppress, you will get it here. Then the left hand side, you have one more option, the bank account. So double click on bank account. Double click on bank account. इसके पहले इसको शायद सेव, अच्छा इसको सेव करना पड़ेगा पहले. सेव इट. Before that you have to save it. Once the data is saved, okay, then the left hand side dialog structures, house bank, and within house bank you have the bank account. So double click on bank account. Double click on bank account. Okay, then click on the new entry. Click on the new entry. Okay, so systems, my house bank is Canara Bank, CANR1. Same account you have to give the account ID also. I will give the same for Lakshat Ranesati. I will give the same.
CANR1. Okay, and the bank will be as a same name, you can CANER, Canara Bank. Canara Bank Limited, Pimpri branch. And then your account number. आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा कुछ भी. So for example, this is your account number, right? Then the currency, account currency will be INR. Say here the INR. Okay, and these house bank attached with GL account. We have created a GL account, Canara Bank. So click on the search option here, and then from DN10 you can see this is my bank account number. 18,000 is my GL account. So 18,000 GL account is my Canara Bank house bank. So it will be the interlink. ओके सो तो पता चल जाएगा कि जब आप हाउस बैंक कैनरा CANR1 सिलेक्ट करेगी और अकाउंट आईडी CAN1 सिलेक्ट करोगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैन अंडरस्टैंड कि पैसा कौन से बैंक से जाने, कौन सा जेल से जाने वाला है. सो माय जेल अकाउंट इज 18,000 here. Okay, note down this one. Clear? Clear. And then save it. And then save it here. Okay, so I have my GL account 18,000. Okay, transport IBAN. ठीक है, ठीक है. So this is my house bank. House bank has CANR1 and my account ID will be CANR1 here. Okay, so in CR1 my GL account attached here is 18,000. अब तक हम लोग 18,000 manual selection करते थे, but when we are processing the automatic payment process, that time systems will not ask you the GL account number, it will ask you the house bank and account ID. Once you selected Canara CANR1, then it will be automatically catch the GL account as 18,000. Okay, and then save it. Click on the save and then go back from here. So like this, you can maintain your n number of house bank here. Okay, house bank, and you can assign the account ID. So you can see everything is here. House bank CANR1, account ID CANR1, account number, tax, and then if you go to here as a bank, okay, so this is enough here. Then go back from here, again go back from here, again go from here. Okay. Now we have to maintain check lot. Write down the next step as a define check lot. Define check lots. To define the check lot, the T codes are FCHI. T codes are FCHI. Okay, T codes are FCHI. Then execute the T code FCHI. Okay, so then system asks you the paying company code. So without defining your house bank and account ID, you cannot create a check lot. जब तक कि हम लोग बैंक में अकाउंट नहीं खोलेंगे तब तक कि हमारे को बैंक चेकबुक देगा क्या? नहीं देगा. तो जब अकाउंट खोलेंगे तो उसी टाइम पे आपका हाउस बैंक आईडी, हाउस बैंक भी आ जाएगा और अकाउंट आईडी भी आ जाएगा. So ऐसे भी ask you the paying company code. That means our company code. Our company code is DN10, and under the DN10, how many house bank we have? Click on the search option here. We have this Canara Bank here. Then account ID, also you can click on the search and you will get, you have only one account ID here. ऐसा अगर आपका 10 रहेगा तो 10 का लिस्ट आ जाएगा इसमें. Okay, note down this one.
Can we go next step, madam? Kanchan madam? Okay, so the top of the screen. Yes, madam. हेलो सर, इट्स अ पार्ट टू होगा? नहीं, इसका पार्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट टी कोड से जाने का है. ठीक है. Then top of the screen you have the option here, the change. Click on the change here. Second option. Click on the change. Then you will get the another screen. Now you have the create here. एक बार आपको change में create करना है, उसके बाद आपको create में click करने का है. So once you will click on the create, तो हमारे पास में कितना 5 चेकबुक दिया है सिस्टम में, कैनरा बैंक में. So we'll share the lot number 1, lot number 2, lot number 3, lot number 4 and 5. So first lot, you can say lot number 1. Check number, from check number and 2 check number रहता है उसमें. So we have 100 checks. So it was starting from say 400 और 100 बोला तो कितना होगा 499. ठीक है. Then next check lot number not required here. Then short information. Okay, short information means who are entering this information and or who has bring the checkbook from bank. Okay, so we can see as a Ganesh or Satish. And purchase date means today's purchase date. So you can say the purchase date as a today's purchase date here. तो आज हमने बैंक से चेकबुक लाया, हमने सिस्टम में आज उसका चेक लॉट मेंटेन किया. सो दिस विल बी द इंफॉर्मेशंस. ओके, नोट डाउन दिस वन. Okay, and then save it. Click on this continue. Say continue here. Continue. You will get lot number 1, 2, 3, 4, 5, and it will be starting point and it will be ending point here. Okay. The next lot will be, you can say the 2. Please the check lot does not take. Okay. Create the first. First you have to create it and then you can maintain it. Okay. Then save it. Click on the save and then go back from here. So like this you can maintain your all bank, house bank informations, house bank and house bank ID, and after that you can maintain the check lot of each and every house bank separate. Okay. Now next we'll go for the automatic payment program, APP. Automatic payment program. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम होता क्या है, क्या होता है? जब माल परचेस होता है हम कर लेंगे, हाँ हाँ, उसका पेमेंट तुरंत हो जाएगा. तुरंत कैसे क्या? पेमेंट टर्म उसका 30 डेज का है, 60 डेज का है. तो क्वालिटी का चेकअप होगा, जो आइटम हमने परचेस किया है उसका चेकअप होगा. अगर वो सही होगा तो बाद में 30 दिनों के बाद पेमेंट डिडक्ट हो जाता है. ओके, नॉर्मली तो ये ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम ये सिर्फ SAP में ही है, बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर में ये चलता नहीं है. बिकॉज सपोज यू हैव द टाटा मोटर्स, ठीक है, सो द डेली यू आर रिसीविंग मल्टीपल इनवॉइसेस. ओके, आपके 200-300 वेंडर हैं, 300 वेंडर में से हर एक वेंडर आपको दिन में से 3 बार मटेरियल देता है. ठीक है, तो 300 वेंडर हैं जिनमें से आपको 1000 इनवॉइस आते हैं आपके पास में, 300 वेंडर में से 1000 इनवॉइस आते हैं. ठीक है, तो
इन लोगों का पेमेंट टर्म, सबका पेमेंट टर्म अलग अलग है, किसी का 30 डेज है, किसी का 45 डेज है, किसी का 60 डेज है, किसी का 90 डेज है। तो मैन्युअली हाउ यू विल कंट्रोल, और कौन सा कितने चेक आप हाथ से लिखोगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल. For that, the SAP have the automatic payment program. Once your invoice will due, that time, if I am running the automatic payment process, my systems will collect all the due invoices. Okay, all due invoices, making the one payment advice. Okay, हर एक vendor का एक advice बनाएगा, and then finally at the time of creating the vendor master data, we have maintained the vendor bank information. So collecting the vendor bank information from the my vendor master data, okay, generating a one file. After generating the file has goes to the my manager for approval. Once the file is approval, for example उसमें 50 vendor का payment का list आ गया है, okay, due date जितना जितना है उसका सबका list आ गया, okay, and my manager will approve the list in the systems. Once my manager will approve the list in system, that the list is automatically attached to my bank account, Canara Bank, and then if I have a sufficient balance in my Canara Bank, when the bank will run the batch, that time it will automatically deduct from my account and it will be directly goes to the vendor credit account. Okay, that time the entry will pass automatically. In the same way, once I'll done all the process, my systems post each and every invoice and their house bank, and it will post in my vendor balance as well as it post to my bank bank account. तो सिस्टम में जब हम लोग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस करेंगे, तो जब हम लिस्ट में बनाऊंगा, लिस्ट बनाते वक्त में सिस्टम ऑटोमेटिक सब जो भी आपका 300 इनवॉइस होगा, 400 इनवॉइस होगा, 50 वेंडर होगा, हर एक का वो स्टैंडर्ड पेमेंट के हिसाब से उसको स्क्वायर अप करते जाए, ऑटोमेटिक करेगा वो. यू डोंट हैव टू पोस्ट मैन्युअल एंट्री इन सिस्टम्स. ओके, तो ये हमारे पास में 300 वेंडर है, हमारे पास में हर महीने का 1000 आता है, 25,000 इनवॉइस आता है, तो उसका कौन सा ड्यू कब होगा, मैन्युअल इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, जब छोटा बिजनेस रहता है तो पॉसिबल होता है, बट जब बड़ा बिजनेस हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है. इसीलिए एसएपी में ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस का एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट आज भी टाटा मोटर, महिंद्रा, VW, अशोक लेलैंड, स्कोडा, सब जो बड़ा बड़ा कंपनी, थर्मैक्स हो गया, सब बड़ा बड़ा कंपनी सब ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस ही यूज कर, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है. 1 लाख का 10,000 नहीं होगा, या 1 लाख का 25,000 नहीं होगा. It will be complete control by the systems, not manual control. Or it's standard. Normally, automatic payment process only for the standard payment method, not partial payment method allowed, not rescheduling payment methods are allowed here. Okay, only standard payment method. Invoice value equal to your check value. जब 30 days होंगे, मतलब एक मिनट का 30वां दिन है, उसी दिन पे वो जाएगा या फिर 1-2 दिन पहले, ऐसा नहीं, उसमें क्या रहता है, साइकिल, पेमेंट साइकिल रहता है. जो भी तुम्हारा पेमेंट 30 तारीख तक के ड्यू हो गया, वो हम एक बार 5 तारीख को पेमेंट साइकिल रन करेंगे, एक बार 15 तारीख को पेमेंट साइकिल रन करेंगे, और एक बार 25 तारीख को पेमेंट साइकिल रन करेंगे. तो जो भी आपका इनवॉइस ड्यू हो गया उस डेट तक के, वो आपका 30 तारीख तक के ड्यू हो गया आपका पेमेंट, तो वो आपका पेमेंट मिलेगा 5 तारीख को. तो 5 तारीख तक जितना भी होगा हमारा वो सब कलेक्ट होगा, और सिस्टम वही हिसाब से डाटा कैप्चर करेगा उसमें. तो ये सब सेटिंग हमारे को ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में करना पड़ता है. कहाँ से शुरू करने का, उसने काउंटिंग इनवॉइस डेट से शुरू करने का है, या पोस्टिंग डेट से शुरू करने का है, या सिस्टम के डेट से शुरू करने का है. यू कैन हैव ऑल द पॉसिबल पैरामीटर्स इन एसएपी. सो हाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर, वही तो हमारे को सीखने का है इसमें. ठीक है, सो हाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस. जो भी जैसा भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे उस हिसाब से सिस्टम उसको रन करेगा. ठीक है, सो टू मेंटेन द ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, माय टी कोड आर FBZP. FBZP is a T code. FBZP is a T code,
And the path, you can write down the path as a SPRO. Then SAP reference IMG. Financial accounting. Then accounts receivables and accounts payable. Then business transaction. Then under this transfer करने का है, it will be outgoing payment. Okay, so click on the outgoing payment. Under the outgoing payment, we have the automatic payment program. Say click on the automatic payment program. And within this, we have the first option here as a payment method oblique bank selection for payment program. Write down this one. Payment method oblique bank selection for payment program. Okay, and under these options, we have these multiple options here. Okay, now we have to do the configuration step by steps. Under this, first we have to start for the set up all company codes for payment transactions. Under the payment method oblique bank selection for payment program, the first option has a set up all company codes for payment transactions. Okay, now execute the first option. Execute these first options. Execute. Then you will get the list. Click on the new entry. Click on the new entry. And then system asks you the company code. My company code are DN10. Enter the company code here, the DN10. Okay, and in control data, my sending company code are same as a DN10 and company code are also same as a DN10. Sending company and paying company code means if you are getting funds from your internal, that means उन्होंने हमारे को पे किया है इसीलिए पैसा वहां से आने सपोज आपका DN11 से पैसा आया आपके पास में sending company will be DN11 and paying company sending company will be DN10 DN11 and paying company code will be DN10. 11 से पैसा आया और 10 वालों ने यूज किया, ठीक है, इसीलिए आपको सेंडिंग कंपनी कोड और पेइंग कंपनी कोड का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है. नोट डाउन दिस वन एंड कंफर्मिंग. Right, and then save it. Okay, save it. Click on the save options. Systems create a request and then you can accept this request. Okay, and under these options we have to execute the second options. Second options are
set up paying company codes for payment transaction. Paying company codes for payment transactions. And the path will be same. Path will be same. Below the setup all company codes for payment transactions, you have the second option here as a setup paying company codes for payment transaction. Then execution. Then you will get the paying company codes. Then click on the new entry. Click on the new entry. Now my paying company code D and 10. My paying company codes are D and 10 here. Okay, and there is a control. There is a control in systems. In control data, minimum amount for incoming payment. तो minimum amount जो होगा आपको criteria define करना पड़ेगा. For example, मैंने as per my company policy, incoming payment जो मेरे सिस्टम में आएगा वो 10,000 से कम आना नहीं चाहिए. Okay, so I will enter here as a minimum amount for incoming payment will be 1,000. ओके और जब मैं ऑटोमेटिक पेमेंट करूंगा मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग सो इट शुड बी एज पर योर पॉलिसी आई कैन से 1,000 रुपीज तो बिलो 1,000 रुपीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट अलाउड इन दिस कंपनी कोड फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन तो अगर आपने 850 रुपए का ट्रांसफर किया तो वो हमारा एसएपी रिजेक्ट कर देगा उसको ठीक है अगर वेंडर का भी अगर आपको 850 रुपए का पेमेंट आपने ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में लिया सिस्टम बोलेगा दिस पेमेंट आर नॉट अलाउड फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस यू कैन प्रोसेस दिस पेमेंट फॉर अ मैनुअल पेमेंट प्रोसेस ठीक है तो मैनुअल पे आप कर सकते हैं कभी कभी हम स्टेशनरी या छोटी छोटी चीजों के लिए स्टेशनरी वो अगर लेते हैं पार्ट्स भी अच्छे से नॉट अलाउड ये ऑटोमेटिक मैनुअल आप कर सकते हैं बट ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में नहीं आएगा वो इसीलिए क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि अगर आता है तो 1,000 रुपए के इनकमिंग पेमेंट शुड बी नॉट लेस देन 1,000 रुपीज एंड एट द सेम टाइम मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट शुड नॉट बी लेस देन 1,000 रुपीज तो 850 रुपए का अगर बिल है तो आप उसको ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में नहीं ले सकते हैं आपको पे करने का है तो आप मैनुअल चेक निकालो मैनुअल एंट्री पोस्ट करो F-22 से और करो वो बट ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में नहीं आएगा वो ठीक है नोट डाउन दिस वन okay and then save it again systems create a request and then you can accept this request okay then go back from here then the next will be as a setup payment methods per country for payment transactions तो हर एक कंट्री में जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो एसएपी में अलग अलग है ठीक है तो वो कौन सा है हमारे इंडिया का में जो हम लोग पेमेंट करते हैं हम इंडिया में पेमेंट कैसा करते हैं आइदर चेक और बैंक ट्रांसफर ठीक है बट अदर कंट्रीज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है दैट वी विल सी इट सो फॉर दैट वी हैव दिस इज चेकिंग पार्ट बट वी शुड नो दैट okay so double click on setup payment methods per country for payment transactions
set up payment method per country for payment transactions. Then execute, say execute. Once you will execute, you will get the complete country list. Okay, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में SAP के थ्रू इतना पेमेंट मेथड है. ACK, this is the Australian language, so we cannot understand. Then Austria and Australia. Belgium have the customer collection, foreign bank, then this is. Brazil, you have these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Canada have only two payment method, check and transfer. Switzerland, you have these payment method here. Okay. Then China have the three payment method here. Bank exchange, that means bank means bill of entry, then check and bank transfer. ये cash होगा शायद. Then Cambodia have two payment methods. Germany, you can see Germany have the how many payment methods have here. Okay. These are the possible payment method through SAP. ओके जर्मनी कितना बड़ा है? हमारे महाराष्ट्र इतना ही है, बट ऑल पीपल्स आर very forwarded and very qualified, so they are using, because SAP comes from Germany. This SAP is a German software. This is not Indian software or a UK software, US software. This SAP is a German based software, not India. Okay, so but they have considering the more than 15 payment methods. Okay, then you can say Denmark, Spain, France. Okay, and you can see India, we have two payment methods. Okay, C and T, check and transfer. So what is the parameter for check? Okay, so you can double click on C here and you can see here the country will be India, payment method will be C, description will be check, and payment method for outgoing payment only, not outgoing payment. Okay, and ensure that when you are doing the configuration, these parameters should be available in this criteria. अगर इंडिया कंट्री है तो पेमेंट मेथड सी में आउटगोइंग पेमेंट पे टिक होना चाहिए, चेक पे टिक होना चाहिए, अलाउड फॉर पर्सनल पेमेंट पे टिक होना चाहिए, एंड देन यू कैन हैव द पोस्टिंग डिटेल, दैट मींस KZ and DZ, vendor payment and customer payment. Okay, these are the two important factors. अगर आपको लिखने का तो लिख सकते हैं, है सिस्टम में, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि है क्या नहीं है. अगर नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते. ओके, तो सर्वर लेवल पे एक बार चेक कर लेने का. At a server stage we have to check it, so you will understand that. Okay, so मेरे सिस्टम में तो है, बट मेरे सिस्टम में है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा. अगर मेरे सिस्टम में नहीं है तो मेरे को वो कॉन्फ़िगरेशन लाना पड़ेगा. कहाँ से लाना पड़ेगा? SAP से लाना पड़ेगा. वो अगर पैच नहीं है तो हम कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं क्या? एरर देता है ना वो. तो अगर ये पैच अगर नहीं है तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस रन नहीं करेगा. ठीक है, तो सी के लिए क्राइटेरिया है. ओके, और डी के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि डी के लिए क्या क्राइटेरिया है. इट्स पेमेंट मेथड टी, and then outgoing payment method, bank transfer, allowed for personal, and then you can say as a posting details will be KZ and DZ. So this is only the checking part. So once you have checked it, okay, then we can go for the further configurations. आप लिख के रखो for only checking part. You don't have to do anything here. This third step has only the checking part here. तो देखिए जापान का है, एवरी कंट्री, दोज आर द कंट्रीज द सिस्टम हैज गिवन द पॉसिबल ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड थ्रू द SAP. नेदरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सो दीज आर ऑल द कंट्रीज हियर. यूनाइटेड स्टेट, द पीपल आर आल्सो यूजिंग द पॉसिबल पैरामीटर ऑफ SAP पेमेंट मेथड.
Okay, biller direct, then bank debit, then MT101, ACH check. So these are the payment method. So हमें तो उतना समझ में नहीं आएगा, हम लोग यूएस के हैं ही नहीं, हमें तो इंडिया का है, हमारे को तो चेक और बैंक ट्रांसफर ही पता है और आरटीजीएस पता है। नेट बैंकिंग तो अभी आया, पहले तो कोई नेट बैंकिंग करता ही नहीं था। पहले सिर्फ क्या करते थे, अगर पैसा ट्रांसफर करने का है तो आरटीजीएस करते थे, वो भी बैंक टू बैंक करता था। अभी तो हमारा अकाउंट हमारे फिंगरप्रिंट्स पे है। सो जिससे चाहे उससे हम लोग 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज द पेमेंट मेथड फॉर एसएपी। ओके, देन द नेक्स्ट वन आर सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट। तो हमारी कंपनी के लिए भी एक पेमेंट मेथड बनाना पड़ेगा। सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो हमारी कंपनी DN10 है, तो हमारी कंपनी के लिए पेमेंट मेथड बनाना पड़ेगा। तो कौन सा बनाने का, चेक का बनाने का क्या ट्रांसफर का बनाने का? ट्रांसफर का। ठीक है, चलो हम ट्रांसफर का बनाएंगे। Okay, so double click on this option, double click on this options, execute. Okay, execute, then click on the new entry. हमारे को दोनों बना के रखना पड़ेगा, हम यूज करें या नहीं यूज करें, that is the secondary questions. But for my company codes are DN10. Okay, payment method will be C. पहले हम लोग C का बनाते हैं। तो अमाउंट लिमिट कितना होगा, मिनिमम अमाउंट कितना होगा और मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? So I can give 1000 here also and the maximum amount also. Maximum तो हमें पता नहीं ना, it should be indefinite. अगर हमने यहाँ पे 1 लाख डाल दिया और हमारे को 1.5 लाख का पेमेंट करने के सिस्टम बोलेगा अलाउड नहीं है, करेक्ट? सो दिस इज अ क्राइटेरिया। मिनिमम अमाउंट 1000 के नीचे तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम अभी हमें पता नहीं ना कि वेंडर को कितना पेमेंट हो सकता है। 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया कि 10 लाख, तो 11 लाख पेमेंट करने का, तो क्या करने का? You cannot use this process system, use the error. So for that you can maintain this criteria, maintain this one. Right, and then you can save it. Click on the save. तो ये हो गया हमारा चेक का, वैसा हम लोग ट्रांसफर का भी बनाना पड़ेगा हमारे। So click on the new entry, then the paying company codes will be DN10 और यहाँ पे payment method will be T for transfer and maintain the same parameter. Minimum amount should be 1000 and maximum I don't know. So the indefinite value will be indefinite value. Okay, so this way just we have done 50% configuration, 50 or 40%. So the remaining will be complete tomorrow and day after tomorrow. Correct? Yes, madam. Is it clear now, Meenakshi madam? Hello. Yes, sir. Okay, Ranjita madam. Is it clear or any doubt? I'm saving and go back from here, and then today you can see here these are the two payment method. My company code C and T here. ठीक है, तो ये देखो, ये गुड फूड्स, ये कौन सा है? ये शायद ये लगता है सिटी शिकागो। तो शिकागो में उन्होंने इतना बना के रखा है, तो एज पर देयर पॉसिबल पैरामीटर यू कैन मेक इट, जितना पॉसिबल उतना करो आप इसमें। तो ईच एंड एवरी कंपनी कोड वाइज यू कैन मेंटेन, करेक्ट? सी न्यूयॉर्क, सी दीज आर दी पेमेंट मेथड दे हैव मेंटेन इट हियर।
So these are the company code Fosco Wolfram. Correct. Okay, so now we conclude the today's sessions here, and tomorrow we'll continue from this. So okay, see you, bye bye, and good night.